Now, so the first one which we are going to see, that is the coordinate system. Okay. So how to go for this coordinate system? What are the things which we have to understand in this coordinate system, that we will see. See, when we discuss about the coordinate system is actually a representation of a system in the coordinates. तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है coordinates. Coordinates means there will be two different terms, and with respect to those two terms, we will go for our solution. Okay. So when we go for the graphical expressions or graphical terms, then we use this particular quantity. तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे या ग्राफिकल टर्म्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या होगा, किस तरह से होगा, इसको हम लोग देखते हैं. So previously, while you all were doing graphs, you had done this very simple form of graph. Now you are going to see for two-dimensional graph in a very detailed way. तो तुम लोगों की जो ग्राफ पेपर होगी, उस ग्राफ पेपर में तुम लोग अपने पेपर को इस तरह से दो कॉलम में डिवाइड कर दो. ठीक है. So this line, this horizontal line will be the x-axis. This will be the x-axis. Over here, you can name it as x dash. Over here, the vertical line, this one would be the y-axis, and down you can name it as y dash. Okay. The point where they are intersecting each other, it is origin. This is called to be the origin. Okay. Now, जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस में हम लोगों के पास दो अलग अलग साइड्स आ रहे हैं. एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. So to the right side means the x axis directly, the quantities will be positive. So over here, this is positive 1, then 2, then 3, and similarly you can go for equal distance. In the graph paper you have grids, so on equal distances you will go it for. Okay, so this is 5, this is 6, this is 7, and so on. You can move. And when you go for the left hand side, then it would be negative. So it would be -1, -2, -3, -4, -5. So as much as the space would be there, you can go for it. When you go for the y-axis, the upper one used to be the positive one. So this is 1, 2, 3, 4, 5, and so on. If we have a space over there, whereas the down one will be negative. So -1, -2, -3, -4, -5, and so on. तो इस तरह से तुम लोगों के पास ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा. Now, when you had drawn these two lines, the x-axis and the y-axis, you had already completed over there. After doing so, you will get 4 columns over here. The first one over here, this. The second one will be this. The third one will be this. And the fourth one will be this. Remember this one. So these are known as coordinates. No, coordinates, the quadrants. Okay, not coordinates. Coordinates will come. So these are known as the quadrant. ठीक है. तो ये जो 4 अलग अलग कॉलम्स है, ये 4 कॉलम्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं. So this is the first quadrant, then the second, then the third, and the fourth. It will be like this only. ये इसी तरह से होगा. ये एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा. ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे मन के हिसाब से या फिर अपने बेसिस पर तुम किसी तरह से उसको चेंज कर सकते हो. It will be not. It will be like this only. So it will be from the first to second, then second to third, and then third to fourth, and then fourth to fifth. So this will be the system over here. यही सिस्टम होगा और इसी सिस्टम पे ये चलेगा. ठीक है. अब यहाँ पर जो हम लोगों के पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग एक और भी तरीके से जान सकते हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज बेस्ड ऑन द साइन. ठीक है. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, दैट वुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव, negative positive, and the third one used to be the negative negative, and the last fourth one used to be the positive negative. And this determination we used to come, or we used to identify with the help of the x and y column. ये ध्यान रखना, ये जो x और y column है, इसके basis पर the first one used to be the x, the second one used to be the y. This is always.
It is not like that. Sometimes we can change it in any other way. It will be never be changed. So first the x will be there and the y will be later on. So you have to see for this one the x and the x and the y axis. So with respect to x and y, only we come for this positive and the positive, or the negative positive, or negative negative, or positive negative, whatever it would be. Okay. So these are the quadrants. Again, I'm telling this thing, these are the quadrants. So this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. And the sign of the quadrants are very, very important, because on the basis of that also some questions can be asked. Suppose, for example, a question is there and it has been asked to you that identify the quadrant. So suppose, for example, the coordinates means x and y. Okay. So the coordinates been provided to you as 2 minus 3. 2 minus 3, it has been given to you. So which quadrant it will belong to? How could we identify this one? So to identify this one, you have to see for positive and negative. So positive, negative. The first one is positive and the second one is negative. So which quadrant it is going to be? That would be the fourth quadrant. So you just write it as the fourth quadrant. So the fourth quadrant you can write it as. Okay, so that much only you have to do it over there. So this is the first thing which you need to remember, the identifying the quadrants, and with the identification of the quadrants, you have to go for the coordinate points. So means the plotting of the coordinate points. So how can we go for the plotting of the coordinate points? Let's see for that one also. So just a minute, let me clean it out, these things, so that we can go for the plotting of the points. How can we plot any point? Whatever the points been given to us, or whatever the coordinates been given to us, how we can do it. So suppose, for example, a question is given to you that plot 2 minus 3, 2 minus 3 on the graph. Okay. So the first question which we had done previously, that was identifying the coordinate. Okay. So the quadrant, not the quadrant, the quadrant means वो पता करना था किस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है. अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमको ये पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, उसको हम लोग ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करेंगे. तो देखो, जैसे कि पहले ही बता दिए हैं कि द फर्स्ट वन इज द x and the second one is the y. It will be always. It will not be written over there, but it will be always. So how could we go for this one? So 2. First we will go for positive 2. So where we are having positive 2? So here I am having positive. Here, यहाँ पर हम लोगों के पास positive 2 है. Where I am having minus 3. So in negative y axis. So here I am having this one. So what I will do, I will go for a dotted line like this. ठीक है, -3 से एक dotted line आएगा, 2 से एक dotted line आएगा, and they are meeting to this particular point. So you will use a scale. I'm not using a scale right now. So here it's not going so much straight, but when you will use a proper scale, it will come a proper way. So suppose, for example, the name of this point was A. So you can just name it as this A as 2 minus 3. Okay. So like this, you can place out a point. Similarly, suppose, for example, another point is there. Suppose another point is there. It is saying as for B point, that is 3 minus 1. 3 minus 1. So here it is again, first one is the positive and the second one is the negative. So first one x is positive and second one y is negative. So how could we go for this one? So plus 3 is over here, and minus 1 is over here. So we will just plot a point like this and come to like this, and this point will be B, and it can be named to be as 3 minus 1. Again, let's move to another one. So suppose, for example, the third one, C. Okay, 2 5 it has been asking. So both are in positive. Again, the first one is x, the second one is y. So how can we go for? First one plus 2 is over here and plus 5 is over here. So we will plot the graph like this. So dotted line will be drawn between 2 and 5, and this particular point will be named to be as C, that is 2 5. Okay, so like this, any other point,
any other point, whatever point is given to you. Suppose for example fourth point is given, so suppose it has been given as D, say as it has to be place of for -3 to 2, ओके। सो अगर इसको दिखाना है तो -3 फिर से x के लिए पहला वाला हमेशा x होगा, so this is -3 over here and +2 is over here. So just draw a dotted line with the help of a scale. You put the scale and then you will get the points. So over here this is -3 and 2. So like this you can be able to do the question. Okay, so this is the condition for D. This is the point for D. So like this you can go for. Okay, is it okay? Are you all getting this thing, everyone? सर Yes. हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि ये मतलब -1 से +3 तक किए, मतलब वो लाइन करके वो किए, तो फिर उसको ऊपर भी करना पड़ेगा क्या, जैसे कि +3 से +1 तक? नहीं, देखो जिसका मतलब जिसके लिए बोला जाएगा, जिस पर्टिकुलर के लिए बोला जाएगा, जैसे देखो हम A के लिए किए हैं तो A सेपरेट बना हुआ है, B के लिए किए हैं तो B के लिए सेपरेट पॉइंट है, C के लिए एक सेपरेट पॉइंट है, D के लिए फिर सेपरेट पॉइंट है। तो इस तरह से हर एक किसी के लिए, हर एक पॉइंट्स के लिए अपना अपना एक सेपरेट पॉइंट है, ठीक है। तो जहां पर जिसके लिए बोला जाएगा, से एज फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको एक 5th पॉइंट बोला जा रहा है, हमको एक 5th पॉइंट बोला जा रहा है जहां पर कि वो बोला गया है कि -3 और -5 में जाना है, -3 और -5 के जाना है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पहला x होगा और दूसरा y होगा। तो -3 कहां पर आया है, तो -3 मेरे पास यहाँ पर है, और -5 कहां पर है, तो यहाँ पर है। तो बस अब इन दोनों के लिए पॉइंट्स को हमको तैयार करना है। So I will just draw these points over here like this, and then I will produce it like this. Okay, and the point where they are meeting to each other, that would be my another point. Suppose this is E. This was this point E. ये point E था, and that would be -3 -5 like this only. ठीक है? Are you getting this thing? Yes sir. Is it okay? Is there any problem till here? Is there any problem till here? No sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ। No? Okay. So if ऐसे पता नहीं चलता है। क्या ऐसे पता नहीं चलता है मतलब? सर बनाने के बाद पता चलता है कि डाउट है कि नहीं है। ठीक है, तो तुम बनाओ, कहीं पे भी कुछ डाउट अगर होती है तो फिर तुम हमसे पूछना, जरूर बताएंगे, ठीक है? Is it okay? Now let's see. चलो ठीक है, अब देखते हैं कुछ और प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है? कुछ और इंटरेस्टिंग प्लॉटिंग्स हैं, उसको देखते हैं और फिर उसके बाद इक्वेशंस को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को प्लॉट कर सकते हैं। सो अगेन let's see for a new fresh figure, and with this figure we are going to do some questions, more questions. So over here we are having the origin. यहाँ पर हम लोगों के पास फिर से पॉजिटिव, फिर से बता रहे हैं, देखो ये जो साइड हम लोगों की होगी वो x एक्सिस की होगी, यहाँ पर जो ये साइड होगी इसको x डैश बोल सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में जो होगा इसको y बोलेंगे, और नीचे में जो ये होगा इसको x डैश बोलेंगे। यहाँ पर x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव में आ जाएगा। इधर जब हम लोग जाएंगे सो इट विल बी नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ पर y एक्सिस में ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जब तुम लोग ग्राफ में बनाओ इन एक्सेसेस को, देन यू प्लीज ड्रॉ द लाइन ऑन द डार्कर लाइन। ओके, तुम लोग जब अपने ग्राफ पेपर में देखते हो तो ग्रिड्स बनी हुई होती है, तो ग्रिड्स में देखते होगे कि एक जो 10th वाला लाइन है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और जो 5th लाइन होती है वो थोड़ा सा लाइटर होता है। तो 5th लाइन में प्लीज मत जाना, जो तुम लोग की मेन डार्क लाइन है सेंटर में उसको ड्रॉ कर लेना,
जो 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 वर्टेक्सेस है उसको तुम वहां पे तैयार कर लेना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तैयार कर लेना, और फिर तुम इनको इक्वल डिस्टेंसेस में उनको प्लॉट कर देना, ठीक है, और फिर उसको बनाना। सो ओवर हियर दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब मान लो कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर कि बोला जा रहा है कि प्लॉट अ पॉइंट विच इज 0, 3, ठीक है, 0, 3 दिया हुआ है। तो अभी अभी हम तुम लोगों को बताए हुए हैं कि जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो x होती है, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो y होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोगों को 0, 3 बोला जा रहा है, सो वेयर वुड बी 0? सो रिमेंबर दिस थिंग, whenever any particular axis is 0, then my graph will cross through another point. जब कोई एक पॉइंट अगर 0 होती है, मान लो कि यहां पे जैसे कि x 0 है, तो मेरा ग्राफ का लाइन y से होते हुए क्रॉस करेगा। मतलब मेरा यहां पर x 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये ऑरिजिन पे ही चला गया, और y हो गया 3, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी नेम टू बी एज 0, 3। इस पॉइंट को हम लोग 0, 3 बोलेंगे। और अगर तुमको ग्राफ का लाइन अगर बनाना हो, so you will draw a line just straight to like this. It will be parallel to the x-axis. ठीक उसी तरह से सपोज मान लो कि इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया जा रहा है तुमको, जहां पर कि तुमको दिया हुआ है -2, 0. So over here the x is -2 and the y is 0. Okay, y is 0. So how would you plot the point over here? तो यहां पर जो x के लिए -2 है वो तो मेरे पास यहीं पर है, और y0 इसी पॉइंट को कहेंगे। So this particular point will be named to be as -2, 0. Okay, and if you need to draw a line through this one, then the line will pass through it. ये line इसी से क्रॉस, it is going to pass through this. So इस तरह से ये हम लोगों का बनने वाला है, ठीक है? Are you getting this thing? If you will have zeros in the plotting, are you getting this thing, everyone? Is it clear? Yes, sir. ओके ना, चलो ठीक है, हम लोग एक फिर से उस तरह का क्वेश्चन करते हैं जैसे कि हम पहले बता रहे थे तुम लोगों को। सपोज मान लो कि हम लोगों को दिया हुआ है -3 एंड -2, -3 और -2 दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर से फर्स्ट वाला हम लोगों का x होता है और दूसरा वाला हम लोगों का y होता है। तो अगर हम लोग देखते तो फर्स्ट हम लोग के पास -3 आती है, तो -3 यहाँ पर हो गया, और y हम लोगों का -2 है, वो यहां पर हो गया। बस दोनों के लिए हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, यहां से ये और यहां से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? -3, -2, एंड दैट पॉइंट विल बी द थिंग व्हिच वी हैव टू टॉक अबाउट। इसी पॉइंट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है। सो आई होप दैट एवरीवन हैड गॉट दिस थिंग। Is it clear? Because then I will go for the another thing which you have to go for it. Is it clear? Okay. Now, see, students, you may have been given with some coordinates, and it may be asked that whether it is forming a rectangle or a square or something like that. Okay. तुम लोगों को हो सकता है कि कुछ coordinates दे दिया जाए, और तुम लोगों को फिर पूछा जाए कि whether the given coordinates are forming a square or rectangle or whatever it is will form. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, सो व्हाट यू डू, यू फर्स्ट प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। तुम पहले उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दो। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक कोऑर्डिनेट यहां पर है, फिर एक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास यहां पर है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास सपोज यहां पर है, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास सपोज यहां पर है। तो तुमने ये कोऑर्डिनेट्स को पहले प्लॉट कर लिया। नाउ व्हाट यू डू, यू जॉइन देम। इनको तुम ज्वाइन कर लो, और फिर ज्वाइन करने के बाद देखो कि ये किस तरह का फिगर बन रहा है। जैसे कि अगर ये चार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग देखते हैं, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ रोम्बस। वी कैन से दैट इट्स अ रोम्बस। ये एक रोम्बस जैसा बन रहा है। क्यों ये रोम्बस जैसा बन रहा है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर एक इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर साइड, दूसरे साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 3 यूनिट का है, नीचे भी 3 यूनिट का है। ठीक है, फिर इधर भी अगर इस साइड भी देखते हैं तो ऊपर में 3 यूनिट है, नीचे में 3 यूनिट है, तो टोटल 6 यूनिट्स हो जाते हैं दोनों साइड से। और फिर सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर भी देखते हैं, सो वी आर गेटिंग अ 6 यूनिट, and down also we are going to get 6 units. So hence we can say that it's a rhombus. And why not a square? ये square क्यों नहीं बोल सकते? Because right now it is tilted. It is little bit tilted over here. That's why. But if it would be completely straight, if it forms a completely straight, then we will say that it's a square, not a rhombus. Okay. So I hope that you can go for these kind of questions also. So it would not be a very big problem. Yes. You can be able to do these kind of questions also. So just you have to just put the coordinates and then by identifying the points on the coordinate, you will be able to solve the questions. Okay. Now let's move to the equations. Equations के लिए देखते हैं। तुम लोगों के पास कुछ simple equations दिए हुए हो सकते हैं and it may ask you to plot it on the graph. तो equation को graph में कैसे plot करेंगे? So it's very simple. Just try to understand it, and then I hope that you will be able to do the questions very easy. Suppose that it has been given to you x plus y is equals to 3. This is an equation. This is an equation of 2 variable and it has been asked to plot this equation on the graph. इस equation को graph में plot करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग इसको कैसे plot करेंगे? So before plotting this equation, what you need to do, you make a box. एक छोटा सा बॉक्स बना लो, ग्राफ तो खैर बनाना ही है, एक छोटा सा बॉक्स बना लो और इसको डिवाइड कर दो in some columns. Okay, so over here you make these columns. यहाँ पर इस तरह से x y के लिए कॉलम बनाएंगे और उसके दो वैल्यूज के लिए दो कॉलम बनाएंगे. Now what you do, this is the equation which we have to solve. तुम क्या करो, इस इक्वेशन को लिख सकते हो as x equals to 3 minus y. Okay, now with this equation you can easily see this thing that you are not able to get the value of x until you are not having any value for y. जब तक तुम्हारे पास y का कोई वैल्यू नहीं है तुम x का कोई वैल्यू नहीं प्लेस कर सकते हो. So what you do, you assume. ठीक है, तुम लोग assume कर लो let y equals to 1. अपने मन से तुम लोग खुद से अपने मन से assume कर सकते हो, but I will prefer that you go for only -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, these small numbers. Okay, you can go for any number. You can go for any number according to your choice. But it's my preference that you go for these numbers because it will be small and it will be able to in a good way to represent on the graph. Okay, अगर तुम बहुत बड़े नंबर ले लोगे तो ग्राफ में प्लॉट करने में तुमको प्रॉब्लम. So let y is equals to 1. So therefore x equals to, that would be 3 minus 1, it is equals to 2. So just write it over here, x and y. So if our y is 1, then x is 2. Again, you assume another number. So let y is equals to, this is case 1. This was case 1. This is case 2. So let y is equals to, say as -1. I assume it as -1. So what it would be? Therefore, x equals to 3 minus -1. So it is going to be 3 plus 1. So it will be 4 over here. So when my y was -1, my x is 4 over there. Okay, तो अब जब हम लोगों के पास ये क्वांटिटीज आ गई हैं, जब हम लोगों के पास ये क्वांटिटीज आ गई हैं, तो इनका ही पेयर बनाकर हमको ग्राफ में प्लॉट करना है. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर 2 and 1. पहला जो सेट देखो यहाँ पे, पहला सेट एक्स वाई का क्या बन रहा है, 2 और 1 का बन रहा है, तो हम लोग 2 और 1 के लिए चलेंगे. So 2 and 1 both are in positive. So +2 is over here and +1 is over here. So I will plot the
graph like this. So this is my first point, that is 2, 1. The next point which I will go for, that is 4 and minus 1. 4 and minus 1. So 4 is positive over here and minus 1 is over here. So if I will plot the graph, so it is going to come somewhere over here. And this point is 4 minus 1. Now what you do? You just draw a straight line through it. बस एक straight line इन दोनों point से cross कर दो. इन दोनों point से एक straight line तुम इस तरह से pass कर दो. Okay, like this. So when you will pass it like this, this particular line which you had drawn over here, this line is representing x plus y is equals to 3. This line, the representation of this line is only x plus 3. Are you all getting this thing? Is it okay? Have you all understood this? Students, is it easy? A little bit twisted one. थोड़ा सा completely नया चीज है तुम लोगों के लिए, लेकिन you have to do this one. Okay, so I hope that you all had understood. Let's see one more question. Let's see one more equation. That would be, I think, then you can be able to understand. Okay, so just a minute, let me clean it out for you all. Then we can go for one more question. And this on the same graph, I will plot it out. So I'm not going to erase that one. So that you can understand. So in one graph only, we can have more than one equation also. Okay. Suppose a question is given 2x plus y is equals to 5. Okay. So this has been given to you. So how can you go for this one? So as I said, again, I'm repeating. You first draw a box over here. Okay. You make a box and you divide it into 2 sub basic columns and then make 3 columns over there also. So one would be the x and one would be the y. When you are going to simplify for this equation, then you can say it as 2x equals to 5 minus y. So therefore, x equals to 5 minus y by 2. You got it for this one? Now, after getting this, you have to assume. So you go for case 1. Okay. So let y is equals to 1. So therefore, x equals to 5 minus 1 by 2. So that is going to be 4 by 2. So when you are going to cancel for this one and this one, it is going to 2. ठीक है? तो यहाँ पर y अगर मेरे पास 1 है, तो ये आ गया मेरे पास 2. Now you go for case 2. एक और देख लेते हैं. So case 2. So here let y is equals to minus 1. I'm assuming 1 and minus 1 because it is very small one. Okay, you can go for 0. You can go for 2. You can go for minus 2 also. But as I said earlier, please don't go for a very big number. It will create problem for you only. Okay. So over here, therefore, x equals to 5 minus 1 by 2. So over here, you will get it as 5 plus 1 by 2. So it is 6 by 2. So when you will cancel it, you will get it as 3. ठीक है? तो यहाँ पर ये 3 हो जाती है. So when we are having y as minus 1, then x is 3. So this is the condition which we need to remember over here. Now you just have to plot this one. अब बस तुम लोगों को इसको plot करना है. You just need to plot this. So 2 and 1. So where is 2 and 1? So already we have one that. We have already this 2 and 1. Then the second one is 3 and minus 1. 3 and minus 1. So where is 3 and minus 1? So over here, this is 3 and this would be minus 1. This would be minus 1. So again, we can plot a graph through this one. We can plot a graph through this one. So like this, we can plot a graph through this one. Okay. And this particular line represents the graph 2x plus y. Sorry, just a minute. 2x plus y is equals to 5. Okay. So this is the equation. Is it clear? Are you understanding this thing?
I hope that you all can solve these kind of questions. It's a new one. I can understand, but still you have to do that. And please understand these things properly. Okay, I have done the recording also. I will share the recording with you all so that you can see it again. And if you'd have any kind of doubt, any kind of problem, I had already said that, please feel free to ask me. Okay. So till here only we can do today. And another one we will do it tomorrow. Okay. The last one is left out for the other ones, that is for the circles. So we will do it tomorrow. So yes, okay. So ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं. हम लोग की क्लास खत्म भी हो रही है. हम लोग फिर कल मिलेंगे और फिर जो बाकी प्रॉब्लम्स होंगी या जो बाकी चीजें होंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके ओके देन. Thank you, sir. Okay then. Good night everyone. Thank you.